Hello everyone, welcome to my channel Study Time. So today we will do question answers from the book Snapshots, class 11. It's chapter 2, The Address by Marga Minko. So let's begin with it. The question number 1 given in your textbook is, "Have you come back?" said the woman. "I thought that no one had come back." Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? Certainly, these words of Mrs. Drawling to the narrator give some clue about the story. Even when the war was not in full fury, Mrs. Drawling visited Mrs. S. See, this story is about the war. ये हॉलैंड में ये वॉर हुआ था एंड इट वाज वॉर फॉर फ्रीडम. तो उस वक्त की ये बात है. तो ये जो मिसेस ड्रॉलिंग है टू द नरेटर गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी, क्योंकि ये जो वॉर इतना ज़्यादा तेज़ भी नहीं था, इतना एक्सट्रीम पे भी नहीं था, तब भी जो थी मिसेस ड्रॉलिंग विजिट करती थी मिसेस एस को. द नरेटर वॉज मिसेस एस डॉटर. ये जो हमें स्टोरी सुना रही है वो मिसेस एस की डॉटर है. मिसेस ड्रॉलिंग्स विजिट्स वर बिकमिंग क्वाइट फ्रिक्वेंट. जो मिसेस ड्रॉलिंग है वो मिसेस एस की एक्वेंटेंस थी, उनकी जान पहचान की थी. और मिसेस ड्रॉलिंग है उनके घर बार बार आया जाया करती थी. शी यूज टू कम एंड वेंट अवे विद वन थिंग और दी अदर. और उनके घर से कुछ ना कुछ सामान लेकर वो वहां से जाती थी. इन दिस वे शी वेंट अवे विद ऑल द सिल्वर कटलरी, वासेस एंड एंटीक प्लेट्स. तो जितनी भी अच्छी चीज़ें थी, वैल्यूएबल चीज़ें थी, जैसे सिल्वर कटलरी हो गई, वासेस थे बड़े बड़े, एंटीक प्लेट्स थी, वो सब वो वहाँ से जो मिसेस ड्रॉलिंग थी मिसेस एस के घर से ले जाती थी. द नरेटर्स मदर हैड फेथ इन मिसेस ड्रॉलिंग बट द गर्ल हैड नो फेथ इन हर. लेकिन जो नरेटर थी उसको उस पर बिल्कुल भी फेथ नहीं था. दे हैड टू लीव हॉलैंड टू सेव देयर लाइव्स, क्योंकि इट वॉज अ वॉर टाइम. द वॉर वॉज ओवर. उसके बाद वॉर जो है ख़त्म हो जाता है. मिसेस एस द नरेटर्स मदर वॉज नाउ नो लॉन्गर इन द वर्ल्ड. वो मर जाती है इन बिटवीन द टाइम शी वॉज डेड. द नरेटर वेंट टू 46 मैक्रोनी स्ट्रीट टू मीट मिसेस ड्रॉलिंग. तो यही एक जगह उसका घर था मिसेस ड्रॉलिंग का, एंड द एड्रेस वॉज 46 मार्कोनी स्ट्रीट. शी वेंट देयर इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स. तो वो वहां जाती है अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को देखने के लिए. शी रैंग द बेल. मिसेस ड्रॉलिंग केम आउट. शी was shocked and surprised to see a young lady standing there. After the war, the narrator came back to her town. मिसेस ड्रॉलिंग जो है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड होती है नरेटर को देखकर, क्योंकि वो उसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी. शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द गर्ल. द गर्ल रिमाइंडेड मिसेस ड्रॉलिंग ऑफ हर मदर. मिसेस ड्रॉलिंग ओनली अडर्ड, हैव यू कम बैक. So naturally, Mrs. Drawling didn't expect Mrs. S or her daughter to come back alive. उसे लगता था वॉर में सब मर चुके हैं. And she didn't ask her to come inside. Her behavior was cold and unfriendly, and Mrs. Drawling asked her to come at another time. और वो उसे बाद में फिर कभी आने के लिए कहती है. The second question in the textbook is, the story is divided into pre-war and post-war times. What hardships do you think the girl underwent during these times? See, the girl in the story had to undergo a lot of hardships. During the pre-war and post-war times, we can assume that the girl is from a rich family, as they had plenty of valuable things. During the pre-war, Mrs. Dorling renewed her contact and started visiting their house. तो बहुत टाइम के बाद वो मिसेस एस से मिलती है उस वक्त, और वो ज़्यादा आने जाने लगती है उनके घर. शी टुक अवे ऑल देयर वैल्यूएबल पोसेशंस एज अ प्रिटेस्ट ऑफ सेविंग ऑल देयर नाइस things if they had to leave the place. After the war was over, the girl was living all alone in the rented house with a few pieces of furniture. She wanted to ask for the things from Mrs. Darling, and that she took from their house. Though she found that Mrs. Darling was using those things, she lost interest in them, as she felt they belonged to a connection that no longer existed. Finally, she returned to her rented house without claiming her family's possessions from Mrs. Darling. Question number 3 is, why did the narrator of the story want to forget the address?
वो उस एड्रेस को भूल जाना चाहती थी। जो नरेटर थी वो उस एड्रेस को याद ही नहीं रखना चाहती थी। वाई मिसेस डॉर्लिंग kept the valuable items in her house until the war was over, as she didn't want them to lose during the war in case they decided to leave the place. Her mother gave her the address of Mrs. Darling, 46 Marconi Street. She remembered the address and decided to visit her anyway. She was afraid to visit the place again as it brought back many past memories. When she saw all the possessions, they were arranged in a tasteless manner and she lost interest in them. She could not connect with the things and thought she would not stay at the house any longer. She would destroy the good memories she had with those items. She finally decided to forget the address and not to go back to that प्लेस। तो वो उन चीज़ों को याद ही नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने उस जिन चीज़ों को बहुत ही गलत टेस्टलेस मैनर में, बहुत ही अजीब से मैनर में उन्हें अरेंज किया हुआ था और उसको अब उन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। Question number 4 is the address is a story of human predicament that follows war comment. सी ये जो एक स्टोरी है ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन की है, बिकॉज वॉर टाइम कोई बहुत इजी नहीं होता। बहुत लोगों की लाइफ जाती हैं, बहुत लोगों की फैमिलीज जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। द आंसर इज द वॉर ऑलवेज ब्रिंग अ लॉट ऑफ सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स। इट ब्रिंग्स दैम बोथ डिस्ट्रक्शन एंड डेथ। The address is based on the same theme. During the war, all the belongings were taken by Mrs. Darling, who promised to keep them safe. The mother of the protagonist died and all the possessions were left with the acquaintance. Protagonist means the main character. The major character here is the narrator. उसकी जो mother है वो मर जाती है और उनकी जो भी possessions होते हैं वो उनकी जो acquaintance है उसके पास रह जाते हैं, जो कि मिसेस डॉर्लिंग है। Years later, the girl decided to visit the house whose address was given by her mother years ago. The woman showed no sympathy to her. वो उसे कोई sympathy नहीं दिखाती. She took the time to even recognize her. She thought everyone in her family had died, क्योंकि वो ऐसा सोच चुकी थी। The girl wanted to take back her belongings. She didn't allow the girl to enter the house. She seemed like a woman who didn't have any human emotion. So the war leaves the world desolated and it cannot be healed. क्योंकि वॉर के बाद जो है सब चीज़ें कैसी हो जाती है, डेसोलेटेड मीन्स देयर इज मतलब कि अनइनहेबिटेड हो जाती है, फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, लोनलीनेस होती है। तो इन सब चीज़ों को दिखाया गया है। सो द वॉर लीव्स द वर्ल्ड डेसोलेटेड एंड इट कैन नॉट बी हील्ड। Now we will discuss some extra questions from this chapter. So let's begin with it. How did the woman try to avoid the narrator? The woman here is Mrs. Darling. Okay. The first, the woman refused to recognize the narrator. वो पहचानने से ही मना कर देती है. When she realized that she had been found out, she regretted that she couldn't do anything for the narrator. तो वो उसके लिए कुछ भी करने में interested नहीं होती. Then she asked the narrator to come another time. She gave the impression that there was someone in the house whom she didn't want to disturb. तो वो उसे अंदर बुलाने में या उसे एंटरटेन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। How was the narrator convinced that she had made no mistake and had reached the right address? When the woman who opened the door gave no sign of recognition, the narrator thought she was perhaps mistaken and had rung the wrong bell. तो एक बार तो नरेटर को भी लगा कि वो शायद एक गलत घर में आ गई है। When she saw the woman wearing her mother's green knitted cardigan, she was convinced that she had made no mistake and had reached the right address. लेकिन जब उसने उसको देखा, मिसेस डॉर्लिंग को वो देखती है कि उसने उसकी मदर का स्वेटर पहना हुआ है, इट वॉज अ ग्रीन निटेड कार्डिगन, तो वो उसे रियलाइज हो जाता है कि शी इज एट द राइट एड्रेस। What did the narrator learn about Mrs. Darling from her mother? Mrs. Darling was an old acquaintance of the narrator's mother. जो narrator की mother की एक पुरानी जान पहचान की एक lady थी, Mrs. Darling. The latter had not seen her for several years. बहुत सालों के बाद अचानक ये सब उनका मिलना शुरू होता है. Then she suddenly turned up and renewed their contact.
और वो फिर से आपस में मिलने लगते हैं. Whenever she would leave the place, she took something from her table, silver, antique plates, etc. तो वो जब भी आती थी मिसेस डॉर्लिंग, वो उनके घर से कुछ ना कुछ सामान लेकर जाती थी. Now the question is, did the narrator feel convinced about the views of her mother regarding Mrs. Darling? How do you know? See, the narrator did not feel convinced about her mother's concern for Mrs. Darling. वो बिल्कुल भी convinced नहीं थी. The latter was keen of removing the precious possessions of the narrator's mother to her own house, क्योंकि जो Mrs. Darling थी वो उनका सारा precious सामान जो है वो अपने घर ले जाती जा रही थी. It seems that the narrator did not like Mrs. Darling's excessive interest in her mother's belongings. और उसको ये सब पसंद नहीं था नरेटर को. इट इज एविडेंट फ्रॉम द क्वेश्चन शी पुट्स टू हर मदर. इसलिए जो नरेटर है वो बार बार अपनी मदर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछती रहती थी. दिस कैन बी एविडेंट फ्रॉम योर बुक. इट्स ऑन पेज नंबर 11 दैट it's written in the second last paragraph. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. तो नरेटर उससे अपनी माँ से पूछती थी कि आप ऐसी कुछ बात उससे की है कि वो आपका सारा सामान संभाल कर रखेगी. तो इस तरह के क्वेश्चंस वो पुट करती थी. Why was the narrator horrified when she entered the living room? See, when the narrator entered the living room, she was horrified because she felt as if she was in a room she knew and did not know. क्योंकि वहां पर उसका घर का सामान पड़ा था, लेकिन बहुत ही मिसमैनेज्ड वे में, और कुछ चीजें जो कि सही तरीके से नहीं रखी गई थी. She found herself in the midst of the things she wanted to see again, but which distressed her in the strange atmosphere. Means उसको एक मतलब distressed her means she was suffering from pain also. There was a sorrow also, and it was a very strange atmosphere. She was oppressed to see them arranged in a tasteless manner. Means oppressed means a feeling of heavily burdened by anxiety. उसको दुख हो रहा था ये सब देखकर कि किस tasteless manner में उन सब चीजों को रखा गया है. Question is, of all the things I had to forget, that would be the easiest. What does the speaker mean by that? What is the significance in the story? That here stands for the address. The words number 46 Marconi Street, that is the address recurred throughout the story. The address is important for the narrator at the beginning of the story. However, at the end of the story, she resolves to forget it, as she wants to break off with the past and move on with the present into the future. तो वो उस एड्रेस को ही भूल जाना चाहती थी, क्योंकि जो उसका कनेक्शन था उन चीज़ों के साथ, it was through this address only. So she wanted to forget that address. Thank you so much. If you like the video, kindly like, share and subscribe. Thank you so much.